Good evening, everybody. I'm Sayukta from Bladder Wellness Team. I'm sure all of you must be keeping good health. OAB or overactive bladder is a frequent and sudden urge to urinate that may be difficult to control. The condition is common and distressing and may have a large impact on the quality of life. In this month of World Continence Week, let's unite to raise awareness about incontinence related issues and its impact on the life of people living with it. To throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of OAB, today we have with us renowned Dr. Vikas Kumar. Dr. Kumar is Senior Consultant Urologist from Varanasi. Dr. Vikas Kumar is having rich experience in the field of urology and carries out the treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. A very warm welcome to you, Dr. Vikas Kumar. It's a pleasure to have you with us for this session. Welcome, Dr. Vikas. Thank you, Sanjita. And hello, everybody. Good afternoon. Yes. Thank you for inviting me for this talk. Yes. And Doctor, as we are celebrating World Continence Week, it's important to know why there is a need to celebrate World Continence Week, or what is the significance, क्यों we have World Continence Week for awareness. So for that, you should know what is incontinence. That is involuntary urge to pass urine. There are people who cannot hold their urine for long and they pass it on the way to bathroom. They like swallow their floor. It's very distressing symptom. Like the person is like socially there is not acceptable because the surrounding people also think, okay, he or she is not able to hold it. The person has to rush to bathroom every time he gets the urge. He like normal people cannot hold for long time. So that is called incontinence. So now you can understand why it is important to celebrate this continence week to make awareness about this problem, because many people think that this disease is like aging process. ये तो उम्र बढ़ रही है तो ऐसा होगा ही, बट ऐसा नहीं है. ये एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है और इसके लिए इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग ये वर्ल्ड इंकॉन्टिनेंस वीक सेलिब्रेट करते हैं. बिल्कुल, और यही वजह है कि हम ये सेशन यहाँ पर कर रहे हैं ताकि हम अवेयरनेस फैला सके वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक को लेकर और ये बता सके कि साइलेंट सफरिंग इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर, सो प्लीज कम अप, टॉक अबाउट इट. अगर सिम्टम्स है तो बात करिए अपने डॉक्टर से. तो उससे पहले हम समझ लेते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में. डॉक्टर, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर एक्टिव ब्लैडर, व्हाट वी कॉमनली कॉल OAB. Please tell us what an OAB is. Okay, overactive bladder और हिंदी में जिसे अति संवेदनशील ब्लैडर को कहते हैं. Basically, it's a group of symptoms where the major symptom is urgency. The person who is suffering from overactive bladder cannot hold urine for long time. So he has to go to pass urine frequently. He cannot hold urine till he reaches bathroom, and involuntarily he passes the urine. So this is called urge incontinence. Urgency of to pass urine, urge urinary incontinence, and increased frequency of urine, nocturia, that is passing urine in night time. The person cannot sleep well, he has to get up and go to washroom. These symptoms collectively are called overactive bladder symptoms. Right. So these are the only symptoms, major symptoms, or anything else as well associated with OAB? मतलब अगर बार-बार urge है कि washroom जाना है, pee करना है, या leakage हो रहा है, तो इसके अलावा भी कोई symptoms है या यही broadly OAB के symptoms? These are the major symptoms. Apart from this, like as I said, like the person is not able to sleep properly. So in daytime he feels sleepy and he feels depressed. He does not have like that sense of well-being. He feels that, okay, I'm not healthy, and generalized weakness kind of thing. These are like minor symptoms, but the major four things are urgency, urge incontinence, increased frequency of urine, and nighttime urination. Right.
तो अगर ये सिम्टम्स है तो समझ जाइए कि आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर का इशू है और इसके लिए यूरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है. नाउ वी वुड आल्सो लाइक टू नो अबाउट द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर एन ओवर एक्टिव ब्लैडर. क्या वजह है, कौन कौन से ऐसे कारक है जिसकी वजह से ओएबी होता है डॉक्टर? एक्चुअली जो मेजर कॉजेज हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक नॉट नोन दैट व्हाई इट इज हैपनिंग, and the most of the time the person has some neurological issue. So that's why it is very commonly associated with neurogenic bladder. So what happens, not in normal people, we have like from the brain there is signal that okay, now your bladder is full and you should go to pass urine. But in this problem the brain gives abnormal signals, like when the bladder is not quite full, then also the person gets signal from brain that okay, your bladder is full and now you have to go, and the bladder suddenly contracts, and that's why patient is not able to hold urine. So basically, due to this nervous system related problems, the, there is abnormal urinary urge, and that is the major symptom, I mean, major cause, that is neurogenic cause. Other causes are uh, the most, the second most common is prostate hyperplasia. The old age people, only males have prostate gland which causes obstruction to urine. And due to this chronic obstruction, like long-standing obstruction, the bladder becomes overactive. So this is second most common cause. Apart from this, behavioral lifestyle related problems are also there. Like if the person is overweight, they are more prone to get overactive bladder. In women, the post-menopausal women, like जिनका menstrual cycle अब रुक चुका है, उनमें ये ज़्यादा commonly पाया जाता है. Then people who take lot of caffeine, like tea, coffee, or cold drinks, they sometimes due to this behavioral problems, they get this overactivity. So these are the major causes. One is neurogenic bladder, then prostatic hyperplasia in males, old age males, then post-menopausal women are prone to this disease, and some being overweight or obese, that also leads to this problem, overactivity. Okay, so by now we know what an overactive bladder is, what are the major symptoms or what are the major causes of OAP. डॉक्टर आपने जो बताया उससे हम ये समझ पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन कई बार हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये हैम्पर करता है. आप ऑफिस में है, बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग तो इतने ज्यादा डर चुके होते हैं कि वो सोशलाइज करने से, बाहर जाने से, ट्रैवल करने से कतराने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बार बार वॉशरूम जाने को नहीं मिलेगा. तो ऐसे में अगर ये जो सिम्टम्स है इन्हें कोई इग्नोर करता है और डॉक्टर से नहीं मिलता है तो क्या कुछ हो सकता है? एक्चुअली हाँ, इस डिजीज में, ओवर एक्टिव ब्लैडर में, बेसिकली कोई ऐसी ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, इसमें कोई जान को खतरा नहीं होती है. ये मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है. कुछ लोग या तो जैसा आपने बताया सोशलाइज होने से डरते हैं, या फिर अगर वो कहीं जाते हैं किसी पार्टी में या सिनेमा हॉल या फिर ऐसे जगह पे, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि सबसे नजदीक बाथरूम किधर है. वो काफी स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें ये चिंता होती है कि अरे लोग क्या कहेंगे. तो मेजरली ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, और बेसिकली क्योंकि ये ट्रीटेबल है तो हमें तुरंत यूरोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए. इससे आप अपने डिप्रेशन में जाने से बचेंगे, आपके लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होगा, आप रात में अच्छे से सो पाएंगे और आप हेल्दी फील करेंगे. Yes, I think the good news is that it's curable, it's treatable, and treatment options are available, as Doctor have just said. So, Doctor, now we would like to know about all the treatment options that's available for OAP. Okay, the first thing is lifestyle changes, like try to lose some weight. Then you should take like proper amount of liquid. You should know
how much you have to take liquid, and the best way is don't take too much of liquid at once. बहुत ज्यादा पानी या कोई भी लिक्विड इकट्ठा एक बार में मत लीजिए, बल्कि थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल से थोड़ा थोड़ा लिक्विड लीजिए. इससे क्या होगा कि आपका बॉडी रेगुलरली हाइड्रेटेड रहेगा. नहीं तो एक बार आप जब बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो उसके बाद आपको कई बार जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ेगा. बट उसके बाद और फिर लास्ट में जब आप कई घंटे पानी नहीं पिएंगे तो उस समय आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा और जलन होगी. तो बेसिकली टेक small amount of liquid at a time at regular intervals. Apart from this, next lifestyle change is to train yourself to pass urine at a, like this is called timed bladder emptying. Try to like don't not holding urine for a very long time. Go at regular intervals. Next, you should, like when you get urge to pass urine, you should not be in hurry. If you are in hurry, then these symptoms increase. You should try to hold urine for a few seconds. So initially, maybe you will be able to hold only for a few seconds, 2 seconds, 5 seconds, but gradually this holding will increase and you will be able to hold for half an hour, 1 hour like that. So these are the lifestyle modifications. Apart from this, in lifestyle modification, you should avoid taking caffeinated drinks like tea, coffee, cold drinks. You should try to decrease these things. If you are having these symptoms more in night, then you should avoid taking liquids after 6 or 7 p.m. Like after evening 6 or 7 o'clock, you should take minimal liquid, whatever is required after food, or to take medicines. So next comes medicines. You should go and meet doctor and they will prescribe drugs to decrease these symptoms so that you will have less urgency, you will be able to hold urine, you will be able to sleep properly in night. Last comes your surgery. But like now there are so many good drugs that surgery is very less likely required. But still, there is option of surgery. So these are the treatment modalities. You should always contact your urologist, whichever is nearest, and they will help you. Yes. So the most important thing is not to ignore your symptoms or signs. If you have these symptoms, please go and consult your urologist before it's too late. Doctor, you have mentioned these treatment options that's available. और सबसे पहले आपने कहा lifestyle modification जरूरी है. तो क्या अगर कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता है और उसको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो हो सकता है कि उसको मेडिकेशन या उसके बाद सर्जरी तक की नौबत ही ना आए, वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो जाए? Yes, definitely. That's what we do. Like when a patient comes with these symptoms, we start them on few medicines which give them immediate relief and advise them what all lifestyle modifications are required. So, because these things take time, pelvic floor exercise or this like liquid intake, these are habits, they take time to develop. So, till that time, we help them with some medicine which gives them prompt relief, and they start doing this lifestyle modification, they start doing pelvic floor exercises, and as these modifications come into effect, we start decreasing the dose of medicine and stop it. So later they are fully on lifestyle modification and exercise, and they get very good result. So lifestyle modification along with Kegel exercises or to strengthen your pelvic floor exercises can take you a long way and help you curb down the symptoms of an overactive bladder. Doctor, I have one more question. There are people who are aging, or there are people who have diabetes or other issues, and they normally associate these symptoms with their aging or being a diabetic. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा अब तो मेरी एज हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो ये सब तो होगा ही प्रॉब्लम, ये उसका इशू है. Diabetic people have the same thing, especially during night, they have to get up very often to go to the washroom and release themselves.
तो क्या इसे एज या डायबिटीज से रिलेटेड इश्यू समझ के सहते जाना चाहिए, या फिर जाकर यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, तो भले ही वो एज कर रहे हो या डायबिटिक हो, उनको भी आराम मिल सकता है? देखिए, जैसा मैंने बताया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो डिजीज है, ये एजिंग पीपल में ही ज्यादा होता है। ओल्ड एज पीपल में, मेल और फीमेल, ओल्ड एज मेल्स एंड फीमेल्स बोथ हैव दिस प्रॉब्लम। And yes, diabetes is one of the cause which like precipitates this disease. So it's very much normal for people to think that yeah, this is happening because of aging or diabetes. But this, you should not ignore this, because it's not like that yeah, it's because of aging or diabetes, so you keep continue suffering. You should meet your urologist. You have all the right to get treated for this. Just approach a urologist, whoever is nearby. They will advise you medicines and lifestyle modifications, and that will help you. And only when you meet a doctor, you will realize that, oh, why did you not go early, and like why did you keep avoiding going to doctor? Because you will have very good relief after. Right. So, like we have so many viewers who's watching this session, and maybe some of them have these symptoms already, but they have never taken it seriously or kind of ignored the symptoms. What should patients do if he or she thinks of having OAB or these symptoms? What should they do? Okay, so one like repeatedly I said, one thing is meet your urologist. Next, you should try to maintain a bladder diary, in which what you have to do is you have to make columns of date, time, and then liquid intake. How much at what time? Next, how much urine at what time he or she is passing. So this, if like these three things are maintained: liquid intake, type of liquid, and uh, amount of urine at what time, at what interval. So this gives very good idea to patient and doctor both that what is happening. You will, but many times the patient themselves realize, oh, when I'm drinking lot of liquid, I'm getting lot of urination problem. So they themselves will decrease the urine intake and they will get relief. So this bladder diary for first is helpful. Second, pelvic floor exercises or Kegel exercises. If you do this, that will strengthen the muscle holds, which helps you hold urine. So once the muscles are strong, you will be able to help hold urine for longer duration. Right. And as I suggested, avoid start avoiding your caffeinated drinks, start avoiding alcohol, and start avoiding to take too much of any kind of liquid at one time. So these things will help you. And still, if you are getting problem, definitely meet your doctor. They will help. Right. Doctor, the later part of your answer where you said that you should avoid coffee, you should avoid alcohol, etc. We have few viewers who are asking the same questions on the same lines. Ramesh is asking, are there foods or beverages I should avoid to keep from making my OAB worse? And Adijan is asking, doctor, is alcohol consumption, can it cause OAB? Yes, directly or indirectly, yes. What happens is when you take alcohol, there is lot of urine formation. That is called diuresis. So first of all, alcohol is liquid. You take it with lot of liquids, and alcohol itself is diuretic. So there is lot of urine formation, and you will feel the urge to go to urine, to pass urine again and again. So this avoiding alcohol, especially in evening times and night, I mean, in general, whole day you should avoid it. In night, especially because that will make you like yours. That will make you sleepless. Right. And yeah, beverages I already told, like alcoholic beverages and caffeinated drinks you should avoid. Apart from that, okay, not major like in food item. I don't think you have to avoid much. You can eat what you like.
Okay. We have Samiksha with us asking what causes overactive bladder in females. And I would like to add to it something. Doctor, you just mentioned Kegel exercises or pelvic floor exercises to strengthen our pelvic floor. Now, in females, especially those who give birth through normal delivery, vaginal deliveries, they often have weak pelvic floor. That's, a condition with Yes. them, most of them. Mhm. Now, do they have the chances of having OAB more? Yes. Basically, in females, there are few factors. One is like I think before this vaginal delivery, I think I would like to mention weight, being like overweight or obese. That leads to weak pelvic muscle. And added to that, if somebody has multiple vaginal deliveries, that also weakens the pelvic floors. Right. So all these issues which weakens the pelvic floor and hormonal changes in menopausal women, that also leads to weakness of pelvic floor. All these factors collectively lead to overactivity. Right. So these are the conditions, especially with female, where why they have overactive bladder. We have सलोनी मेहरा डॉक्टर और जो सवाल वो पूछ रही है वो बहुत से लोगों के दिमाग में होता है, बहुत बॉदर करता है। पूछ रही है क्या ओएबी से मेंटल इफेक्ट होता है? जैसे मैं घर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे वॉशरूम आ रही है, लेकिन घर में ये सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और कई लोग होते हैं जो बाहर जाने से इसीलिए कतराते हैं, झिझकते हैं कि अरे मुझे वॉशरूम आना है, जाना है, वॉशरूम होगा कि नहीं। तो क्या ये एक मेंटल से इफेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल। बेसिकली स्ट्रेस के कारण भी ओवर एक्टिविटी होता है और ओवर एक्टिविटी के कारण स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि when somebody has these symptoms, generally they are like very hesitant in going to public places. They won't be able to enjoy like going to movie or some any public gathering, because it's like very, they feel ashamed that okay, again and again they have to go to washroom. People are noticing that I'm going again and again. Or if they have urge incontinence, it's worse. They get this like social stigma that oh, there may be smell of urine or there may be wet clothes which people will notice. So that gives stress. Even if somebody doesn't have incontinence, just repeatedly going to bathroom uh, is like in ऑफिस पीपल नोटिस, अरे ये तो बार बार बाथरूम जा रहे हैं, और जिसको है वो फिर थोड़ा शर्म महसूस करते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे, तो इसके कारण स्ट्रेस होता है। बिल्कुल एक विशियस सर्कल की तरह है। स्ट्रेस की वजह से ओएबी हो सकता है, ओएबी की वजह से स्ट्रेस हो सकता है और ये सर्कल इसी तरह चलता रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर सिम्टम्स हैं तो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट। वी हैव आकाश सिंह आस्किंग कि क्या ओएबी डेंजरस बीमारी है? हाउ डेंजरस कैन ओएबी डॉक्टर? नहीं, ये डेंजरस बीमारी नहीं है, बट ये बेसिकली जैसा मैंने बताया लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। इससे आपके लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है। आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप प्रॉपरली रात में सो नहीं पाते हैं तो दिन में आपको नींद आएगी, आप प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इसमें ऐसा कुछ डेंजरस नहीं होता। जी, तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन वो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़रूर हैम्पर करता है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, आपने बताया कि क्या-क्या चीज़ें स्पेशली बेवरेजेस में अवॉइड करना चाहिए दैट मे ट्रिगर ओएबी और जो हमारे ब्लैडर को इरिटेट कर सकता है। पानी के बारे में भी डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि वी हैव दिस नोशन कि हमें बहुत पानी पीना चाहिए। वी आल्सो हैव दिस नोशन कि अगर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू है तो बहुत पानी पियो तो वो सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा। हाउ ट्रू इज दैट स्पेशली इन द केस ऑफ ओएबी? ओके, आपने जो बाद में बोला कि हाँ सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा, यस, there are things like if you take enough liquid, you have less chance of getting urinary tract infection or less chance of getting urinary stone. But you should know what is enough. You should take enough liquid, not over drink. एंड आजकल मैं कई बार देखता हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं कि हाँ सुबह उठ के 1 लीटर पानी पियो, फिर नाश्ते के बाद 2 लीटर पानी पियो, नहाने के बाद 3।
2 liter पियो. Don't do that. Okay, you should know what is enough for you, and uh, what exactly is enough is you should you should pass urine in 24 hours about 1.5 to 2 liters. अगर आप 1.5 लीटर से कम यूरिन पास, then that is not enough to remove all the waste material from your body. And if you are passing more than 2 liter in 24 hours, then it causes you like you will have to go again and again to pass urine. So that is optimum, 1.5 to 2 liter of urine in 24 hours. So accordingly, you should take liquid. If it's like summer days like now, then okay, and that also depends like how you are working. If you are working in outside in sun, you are like moving too much on bike and all, not sitting in AC, then you have to take more liquid. If you are sitting in a air conditioned office, you have to take less liquid. In winter season, you have to take less liquid. So if somebody has this problem and if they keep bladder diary, they will know how much urine they are passing in 24 hours, and that will help them realize that okay, they are over drinking. They should decrease their liquid. राइट, तो सबके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं हो सकता. आपके वर्किंग कंडीशंस पे, आप कहाँ रहते हैं, हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ बहुत ह्यूमिडिटी हो, बहुत स्वेट करते हो, आपके वर्किंग कंडीशंस ऐसे हो जहाँ आपको बहुत स्वेट करना होता है. तो इस तरह से पानी की रिक्वायरमेंट भी सबके लिए अलग होती है, लेकिन एनफ एडिक्वेट पानी पीजिए, बहुत ज्यादा नहीं. आशु सिंह हमारे साथ है, पूछ रही हैं कि डज स्मोकिंग हैव एनीथिंग टू डू विद इट? Yes, smoking or any tobacco product, not only smoking, gutta, pan masala, or that manjan or pan, all these things which have tobacco, they have effect on bladder. Not only like they cause cancer and all, but it does increase your overactivity also. You should avoid smoking or any other tobacco product. बिल्कुल. तो टोबैको या सिगरेट या इस तरह की चीजें भी अवॉइड करनी जरूरी है. आशा ठाकुर पूछ रही है, कई बार अर्ज होता है पी करने का, बट नथिंग कम्स आउट. Yeah, that's because you are going to pass urine very frequently. So what happens, like there is not much urine, but you are getting this abnormal sensation or abnormal command from brain to pass urine. That is called urgency. So there is no enough urine inside that you can pass out, but still you are getting this urge to pass urine. So it happens in overactive bladder, but it can happen in urinary tract infection also. Due to infection, there is irritation of bladder, and because of that irritation, you feel like passing urine again and again, although you don't have enough liquid urine accumulated there to pass urine. जी. मोना देवी है हमारे साथ, पूछ रही है क्या ठंड के मौसम में बार बार यूरिन जाना, पानी कम पीने के बाद भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है. ठंड के दिन में कम पानी पीने से भी, जैसा मैंने बताया, गर्मी के दिन में स्वेटिंग ज्यादा होती है तो यूरिन कम बनता है. ठंड के दिन में स्वेटिंग नहीं होता है तो बॉडी जो है ज्यादा यूरिन बनाता है ताकि अंदर ज्यादा लिक्विड एक्यूमुलेट ना हो बॉडी में, और उसके कारण आपको बार बार जाना पड़ता है. तो वो नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है. ठंड में या एसी में रहने पे बार बार यूरिन जाना. राइट. डॉक्टर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, आपने ये तो कहा कि सर्जरीज के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, मोस्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकती है चीजें. ज्यादा हो तो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इनिशियली भी किया जाता है ताकि रिलीफ मिल सके. लेकिन जब सर्जरी की नौबत आती है तो क्या कुछ किया जाता है इस केस में? बिकॉज एक तो आपने बताया कि कई बार क्योंकि सिग्नल मिलता है हमारे ब्रेन को कि ब्लैडर फुल हो गया है, यू नीड टू यूरिनेट, तो न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो दूसरी भी वजह है. तो ऐसे सर्जरी किस तरह की होती है, क्या कुछ होता है? एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन में सर्जरी करनी पड़ती है. उसमें सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन किया जाता है, या जिसमें कि ये एबनॉर्मल सिग्नल्स को कट डाउन करने के लिए होता है. और
दूसरा, कभी कभी ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, बट ये चीजें बहुत रेयर हैं, बहुत ही रेयर हैं, और most of the time, more than 99% people get relief with lifestyle modification, exercise, and drugs, medicines. So surgery is not much required. राइट। आपने जो भी सिम्टम्स बताए ओएबी के, वो बहुत कॉमन है, बहुत सुनने को मिलते हैं, स्पेशली जैसा आपने भी कहा कि आफ्टर अ सर्टेन एज लोग ये शिकायत करते ही हैं। फिर मेन में ड्यू टू प्रोस्टेट आपने कहा कि इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोस्टेट इशू भी बहुत कॉमन हो जाता है। विमेन में आफ्टर मेनोपॉज कॉमन हो जाता है, तो ऐसे में दोनों ही एट रिस्क है इक्वली। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अर्ली एज कि हम बाद में जाके इन सब प्रॉब्लम से बच सके? हाँ, अर्ली एज में दो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक है आप ओवरवेट होने से बचें, आप लाइक अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखें, एक तो ये। दूसरा, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर लाइक अभी खासकर विमेंस में, जब विमेंस प्रेग्नेंट होती हैं तब से ही ऑब्स्टेट्रिशियंस जो हैं वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज शुरू करा देती हैं। अगर वो प्रॉपरली फॉलो करें और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी करें, तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रांग रहेंगे और इससे आपकी ओवर एक्टिविटी की प्रॉब्लम भी कम होने के चांसेस हैं। राइट। गजेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछ रहे हैं कैन प्रोस्टेट डिजीज कॉज ओएबी? हालांकि इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिकली आप बताना Yes, चाहें। definitely it causes. As a man like gets older, after 45 to 50 years of age, the prostate gland starts increasing in size, and what it does is gives obstruction to the passage of urine. So the bladder has to work hard to like empty the bladder, to remove all the urine from bladder. The bladder has to work against obstruction, and this leads to like overactivity, क्योंकि लगातार एक ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट काम करते करते ब्लैडर जो है थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और जब कम भरा रहता है तभी इसे सेंसेशन हो जाता है क्योंकि अभी करना है। So in older age men, definitely benign prostatic hyperplasia gives like predisposes to overactivity. Right. And what are the most common mistakes that people often commit, especially those who have these symptoms? जैसे कई बार होता है हम symptoms ignore करते हैं, या हम बात करने से डरते हैं, hesitate करते हैं, तो ऐसी कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं, और अगर वो ना करें तो शायद जल्दी इलाज संभव? बेसिकली जो सबसे कॉमन गलती है वो ये है ओवर ड्रिंकिंग और कंज्यूमिंग टू मच ऑफ लिक्विड, because people have this notion and even the neighbors and all or the family members they tell, अरे तुम्हें इन्फेक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है, खूब पानी पियो तो इन्फेक्शन निकल जाएगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इससे प्रॉब्लम और बढ़ता है, जितना लिक्विड लेंगे उतना ज्यादा आपको फिर यूरिन जाना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, लाइक मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स हु कम दे टेल दिस कि अरे सर मुझे तो सब लोग बोलते हैं खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, तो उससे ये प्रॉब्लम और बढ़ते हैं। Right. So, as we are moving toward the conclusion part of this session, Doctor, anything that we missed on, or anything that you would like to add or tell our viewers? Uh, like I think I missed on like initial part. I missed on pelvic floor exercises, but later I have covered it. So pelvic floor exercise or Kegels exercise is must. Everybody should do it. That will strengthen your pelvic floor muscles, which are responsible to hold the urine for longer time. Then don't like in young age, don't hold urine for too long. You should go at regular intervals. Don't overdrink or don't consume too much of liquid, any kind of liquid, apart from avoiding the alcoholic beverages or caffeinated drinks. And again, I would like to tell, this is a treatable condition. Don't avoid it, don't ignore it. Go meet your nearest urologist and you will get help from there. Right.
So the good part is that we have treatment options. Lifestyle modification can actually help you curb this problem. So please don't hesitate. Don't sit and waste your time. Just go and consult your urologist. Thank you so very much, Dr. Vikas Kumar. It was wonderful talking to you. Thank you for your valuable time. और बहुत Thank ही you. informative session ये रहा हमारे viewers के लिए. We really look forward for many more such sessions in coming times. Thank you. Sure. Thank you, Sanita, and thank you for me. Thank you so very much, our viewers, for an excellent participation. For more information and updates on the overactive bladder, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, and Insta. Thank you. Goodbye. Good day ahead. Goodbye. Thank you.